welcome back guys, it's Vishal. So today we are going to study globes and latitude and longitude. So I'm an impatient aspirant and love to teach students. So let's start. So the chapter name, as you know, globes and latitude. तो ग्लोब मतलब ये बात, लैटिट्यूड देखिए हमारा लैट्स जो होते हैं बैक में, तो लैट कैसे होते हैं ऐसे, तो लैटिट्यूड और लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे, तो लॉन्गिट्यूड ऐसे ही डिफाइन किया जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर. तो इसके पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि आवर अर्थ इज नॉट ए स्फीयर एंड इट इज फ्लैटेंड इन द पोल्स. इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड bulges in the middle. Can you imagine how it's look? तो ऐसे है, just like this. You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea of globe in a true model and miniature form of the earth. The globe is a miniature form of the earth and it is the true model of the earth. ग्लोब में भी वेरी इन साइज, तो साइज में डिफर करता है, एंड टाइप है बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, तो बिग वंस जो है वो इजीली कैरी नहीं कर सकते, एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स. तो पॉकेट ग्लोब्स भी है और ग्लास में बनाया जाता है वाला ग्लोब भी है, बलून ग्लोब भी है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडली एंड कैरिड विथ ईच. ठीक है. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड एंड दैट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज टॉप स्पिन और ए पोटर व्हील. तो रोटेट भी करता है आज लाइक आवर अर्थ. ऑन द ग्लोब कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. तो ग्लोब में उसका करेक्ट साइज दिया गया है कंट्री, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस का. कंट्री मतलब देश, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश और ओशन मतलब महासागर. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन स्फीयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट. वी नीड ए सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट लोकेशन एंड प्लेसेस. तो इसका मतलब है ग्लोब के लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमें सर्टेन लाइन और लोकेशन को टू लोकेट वी यूज रेफरेंस लाइन्स नोन एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. You will notice that a needle is fixed through the globe in tilted manner, which is called its axis, and 2 points on the globe through which the needle passes through the 2 poles, north pole and south pole. तो इसमें एक needle है which passes through north pole and south pole, और ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज एक्सिस. तो एक्सिस tilted है, ये भी बताएगा. एक ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट अर्थ मूव. तो अर्थ ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो वैसे ही. बट रिमेंबर दिस, देयर इज ए मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल एंड इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन. तो रियल अर्थ में ऐसा कोई नीडल जैसा नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली घूमता है उसकी एक्सिस के चारों ओर. लेट्स take a big round potato or a ball, piercing and knitting needle through it, and the needle resembles the axis shown in the globe. You can now move the potato or ball around this axis from left to right. So pierce करना है एक बॉल के अंदर needle and we can move it like earth moves or globe moves. Another imaginary line running on the globe divides it into equal parts, and the line is known as equator. So it's an imaginary line. So remember this. So equator जो डिवाइड करता है दो पार्ट में, तो नॉर्थ पार्ट को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड इट इज डिस्कस्ड हियर. साउथ हाफ इज नोन. Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate places on the earth. So equator is a reference point to locate the places in earth. All the parallel circles from the equator to all the parallel circles from the equator up to the poles are parallel of latitude. Latitudes are measured in degree. So ये जो parallel lines हैं they are known as latitude. तो lats तो parallel है तो latitude and they are measured in degrees. तो यहाँ जानते हैं इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसके बेसिस पे डिग्री में लेट रिप्रेजेंट द 0 डिग्री इन लैटिट्यूड. तो बताया था. एंड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज आइदर ऑफ द पोल इज फोर्थ, आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ. तो 1/4 है एक इक्वेटर का डिग्री, एंड इट विल मेजर 1/4 डिग्री, सो इट विल बी 90 डिग्री, एंड दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल. सो व्हाई पोल इज 90 डिग्री यू नाउ नो. तो क्या कहा कि 360 डिग्री तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए दिस इज नोन 90 डिग्री. ठीक है. आज सच ऑल द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड. तो नॉर्थ साइड में जो लैट्स हैं उसे नॉर्थर्न लैटिट्यूड कहते हैं, साउथ पार्ट में जो साउदर्न लैटिट्यूड्स. ठीक है. So next, the value of each latitude therefore followed by either of word north or south. Generally this is indicated by N and S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizon in South America, Brazil are located on parallel about 20 degree latitude, but from 20 degree north equator and later in 20 degree south equator. तो ब्राज़ील का एक स्पॉट है हॉरिजॉन्टे and Chandrapur of Maharashtra, both located in 20 degree lats.
तो महाराष्ट्र says in north and Brazil says in south. Latitude in below horizon in 20 degrees south latitude. So I already told that's we move away from the equator, the size of the parallel latitude decreases. तो इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होता जाएगा. तो डू यू नो में by measuring the angle of the pole star from your place you can now know the latitude of the place. तो पोल स्टार से आपकी रीजन का एंगल जितना रहेगा दिस इज योर लैटिट्यूड पॉइंट. तो इसी मेथड से लैटिट्यूड निकलता है. तो यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड्स, इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड का कुछ इंपोर्टेंट पैरेलल्स बिसाइड द इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री. तो इन तीनों को छोड़ के भी और भी इंपोर्टेंट पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23 डिग्री साउथ. तो कैप्रिकन है साउथ में. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन इज इन साउथ. कर्कट क्रांति और मकर क्रांति. आर्टिक सर्कल इन 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल इज 66.1. तो अंटार्कटिक जानते हैं साउथ पोल में है. तो अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल और ये है आर्कटिक सर्कल. तो अंटार्कटिक सुमेरु एंड ये है सुमेरु, ये है दक्षिण मेरु हिंदी में. तो चलते हैं हीट जोन्स. तो ये ट्रॉपिक ये जो कैंसर हैं इनके लैटिट्यूड से इनके मदद से हीट जोन ही निकलते हैं. तो देखते हैं. द मिड डे इन सन इज exactly overheated at least once a year all in latitudes between the tropic of cancer and tropic of capricorn, and this area therefore received as called toroid zone. toroid zone ये है toroid zone. okay, this is known as toroid zone. The midday of sun never shines overhead and any latitude beyond the tropic of cancer, the tropic of capricorn, the angle of the sun ray goes on decreasing toward the pole. As such, the area bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and arctic circle is southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones और नातिशीतोष्ण मंडल. टेम्परेट जोन्स और नातिशीतोष्ण मंडल इसे कहा जाता है. टोरॉइड जोन मतलब उत्तप्त मंडल. ठीक है. तो आर्कटिक सर्कल यहाँ रहा और ये है इक्वेटर के पास टोरॉइड जोन. सो इसके बीच में जो है वो है टेम्परेट जोन्स. नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन उसके पोल के हिसाब से डिवाइड किया गया है. एंड एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द आर्कटिक सर्कल इज साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड इज वेरी कोल्ड. इट इज बिकॉज हियर सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉराइजन, देयरफॉर द रेज ऑलवेज स्टेटेड एंड प्रोवाइडेड लेस हीट. दिस जोन इज कॉल्ड फ्रीज जोन और वेरी कोल्ड जोन. तो यहाँ पे कोल्ड जोन क्या किसे कहा जाता है? तो पोल्स और साउदर्न टेम्परेट जोन से बाहर जो आता है 66.6 डिग्री में, यहाँ पे सन का लाइट इतना नहीं आता और सन का लाइट नहीं आता तो हीट भी नहीं आता, इसलिए ये फ्रीज जोन है. और शीतल मंडल, तो ये उत्तप्त मंडल, ये नातिशीतोष्ण मतलब इतना ठंड नहीं इतना गर्म नहीं, और ये है शीतल मंडल. And then we are going to see longitudes. To fix the position of the place, it is necessary to know sometimes more than the latitude of the place. You can see, for example, the Tonga Island in Pacific Ocean and the Mauritius Island in India Ocean situated on the same latitude 20 degrees S. Okay? And now, in order to locate the precisely, we need to find out fast and easy. Find out east or west. These places are given from line in reference running from the North Pole to South Pole. So it is given. So with latitude, here is the Mauritius, okay, and here is the Pacific Ocean island, Tonga Island. So both are situated in 20 degree S, मतलब south में. So how do we determine the location of these places? So we have to find out longitudes to determine the place, and which runs from east and west, and latitude went from north to south or south to north. So these lines are reference are called Mediterranean and longitude. Mediterranean lines कहा जाता है या फिर longitude कहा जाता है. And the distance between them measured in degrees of longitudes. And each degree is further divided into minutes, and minutes are also divided into seconds. And there are semicircles, and distance between these decrease steadily poleward until become zero at the pole where all the Mediterranean meets. तो पोल्स तक जाते जाते जीरो हो जाता है या फिर यहीं से पोलर प्राइम मेडिटेरियन जीरो है, फिर यहाँ से जाएंगे तो डिग्री बढ़ता है, और डिग्री को भी डिवाइड किया गया है मिनट्स और सेकंड्स में. तो लेट्स डू. ड्रॉ ए सर्कल. लेट द प्राइम मेडिटेरियन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑफ अ कलर एंड लेबल द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड सिमिलरली ड्रॉ ऑन द सर्कल. लेट द इक्वेटर डिवाइड इट इनटू टू हाफ्स, नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. सो ये रहा है कि हमारा अर्थ का मॉडल. तो कैसे करना है आपको बताता हूँ. तो यहाँ पे एक मेरिडियन क्या कौन सा प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज द इक्वेटर. ठीक है.
तो यहाँ से आएगा हमारा लॉन्गिट्यूड्स और यहाँ से आएंगे लैटिट्यूड। Unlike parallel latitudes, all the meridian are equal length, and thus it was difficult to number of meridians. Hence, all countries decided that the count should be begun from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. So, prime meridian is located in Greenwich, in Britain's Royal Observatory. Where is British Royal Observatory? जहाँ पे है तो वहीं पे located in Greenwich, British Royal Observatory. So Greenwich British Royal Observatory is known as primary meridian, and its value is 0 degree longitude, and it counts 180 degree eastward and as well 180 degree westward. So primary meridian here 180 degree eastward and 180 degree westward. And the prime meridian and 180 degree divides the earth into two halves, and the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore longitude of the places are followed by E letter and by W letter, where the interestingly to note that 180 degree and 180 degree on the same line. बताया मैंने आपको ये how to do में. Now look at the grids of the parallel latitudes and meridians of the longitude on the globe, and you can locate at any point on the globe very easily to know if latitude and longitude. For example, Dhuburi in Assam is situated in 26 degree north and latitude 90 degree east. Find out point where these two lines caught each other, and that point will be located of Dhuburi. देखा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जैसा है, देखिए ऐसे. To understand this clearly, draw a equidistant vertical horizontal line on the paper and label the vertical rows with the number of horizontal rows. Later, draw some small circle randomly on the point and where horizontal vertical intersect each other. Name this small circle A, B, C, D, and E. Let's vertical line represent east longitude and horizontal lines means north longitude. So there is a so we have to draw a graph. So it will be vertical lines will be east longitude. Okay, E longitude long and in lat. So A point will be on B1. It will on B1 A point, and B point will be on D1. C point will be on C3. D point will be on D3. E point will be on D3, and E point on B on the D point will be in the E3 and E point will be in the B4. Now we will see the circle A located in BN, and so मैंने बताया जैसे तो BN जैसे longitude 1 degree A. तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द सर्कल. तो मैंने सर्कल का लोकेशन फाइंड कर दिया है पहले से. So these are the locations. I think this is the time zones. No, this is Greenwich. So here is the meridian 0 degree, and there it goes. And these are the +3, +2, +1. These are the time zones. +5, +7, +8. So these are the time zones. Okay, figure out the time zone of the world. So how much is left? Long time. So it is going to end. So in the next episode we are going to discuss about the time zones and also discuss the question answer. So that's it. If you like this video, do subscribe my channel and comment if is there any doubt. I will solve it.